नमस्कार। मेरे इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 11 प्रोडक्ट डिसीजंस को कंटिन्यू करते हुए है। इसमें हम ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करेंगे। Welcome to my lecture series, and in this lecture number 11 of mine, we would be discussing about the product decisions which we have already started off, but now today we'll be talking about the decisions taken regarding branding, labeling, packaging, and after sales services by the marketers. While we were discussing the product, we talked about how we have to decide about various strategies regarding products. Now, in this case, we will take the talk about the branding decisions. Now, what is a brand? First, we need to understand कि brand होता क्या है. Brand एक नाम है, साइन है, सिंबल है, जो एक सेलर को दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है. कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा सिंबल जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए रख लेते हैं, जिससे कि उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है और उसकी वजह से एक सेलर से दूसरे सेलर के प्रोडक्ट में एक कस्टमर डिफरेंशिएट कर पाता है. So this is known as branding. When we brand our product, as a marketer, we have to work a lot for years to build that brand. And when that brands become very popular, then it starts having its brand value and starts giving brand, a brand equity, in the sense that we start earning money because of the brand name, right? So brand loyalty is built. So branding is a very big thing, but in this particular chapter we will be just touching upon the branding decisions which we have to take as a marketer when we are trying to decide about the product of a कंपनी. जब हम अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें ब्रांडिंग थोड़ा सा हम इस समय टच करेंगे, बिकॉज एक ये बहुत बड़ा एरिया है और इसमें हमें सिर्फ यही इस लेक्चर में हमें सिर्फ यही जानना है कि एक मार्केटर जब एक ब्रांडिंग डिसीजंस के बारे में सोचता है तो कौन से डिसीजंस उसको लेने होते हैं जब वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करने की कोशिश करता है. क्योंकि जब एज अ मार्केटर हमने डिसाइड कर लिया कि हम फलां प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और इतने प्रोडक्ट लाइन में रहेंगे, इतना प्रोडक्ट मिक्स रहेगा, तो हमें अब ये भी डिसीजन लेना होता है कि उनकी ब्रांडिंग कैसे की जाएगी, कैसे ब्रांड किए जाएंगे, प्रोडक्ट्स ब्रांड किए भी जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, जेनरिक प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे. सो दिस ये ब्रांडिंग के अंदर आता है. सो ब्रांड जब हम क्रिएट करते हैं, इट कैन बी क्रिएटेड फॉर वन सिंगल आइटम और इट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ फैमिली ऑफ आइटम्स, दैट इज प्रोडक्ट लाइन के लिए क्रिएट किया जा सकता है, या सारे आइटम्स जो है सेलर के वो एक ब्रांड नेम के अंदर आ सकते हैं. सो ये डिसीजंस होते हैं जो एक सेलर मार्केटर को लेने हैं कि ब्रांडिंग वो किस तरह से करेगा अगर वो करेगा तो. सो चलिए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रांड्स क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ ब्रांड्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स. देयर कैन बी मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, लाइक मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड रखता है और वो उसको उस तरह से ही सेल करता है, अपने ब्रांड के नाम से सेल करता है. प्राइवेट ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड्स आर द ब्रांड्स विच आर यूज्ड बाय द सेलर्स, रीसेलर्स और रिटेलर्स और होलसेलर्स. जब इंटरमीडियरीज अपना कोई ब्रांड नेम बना के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसको प्राइवेट ब्रांड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार, रिलायंस ट्रेंड्स. जब ये रीसेलर्स जो रिटेलर्स हैं, ये अपना कोई ब्रांड, बिग एप्पल, राइट, सो जो रिटेल चेन्स हैं जब अपना ब्रांड कोई बना के सेल करती हैं तो उसको हम प्राइवेट ब्रांड में लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग बट इन ट्रेडिंग दे आर यूजिंग देयर ओन ब्रांड. देन लाइसेंस ब्रांड्स. लाइसेंस ब्रांड्स में क्या होता है कि एक कंपनी अपना लाइसेंस देती है किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंसर. सो जब एक लाइसेंस और उससे उसको परमिशन मिलता है लाइसेंस्ड कंपनी का ब्रांड यूज़ करने का. सो इन केस ऑफ फ्रेंचाइज we use these kind of licensed brands. So licensed brands के अंदर जब एक कंपनी अपने ब्रांड को यूज़ करने का लाइसेंस किसी दूसरे को देती है और वो ब्रांड नेम उनकी कंट्रोल के अंडर यूज़ किया जाता है, then it is known as licensed brand, right? So it is up to the marketer what decision he has to take regarding regarding the branding of his product. Now, how do you select a brand name for the product? This is the major decision which a marketer has to take. He has to decide that when he wants to give a brand to the product, would he like to give a company name to it
or would he like to give an individual name to individual item of the product line, or would he have a separate brand family name, maybe a product line, or an umbrella brand name. So ये decision name selection के रहते हैं कि क्या आप कंपनी का नाम यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टाटा. Tata is the company name which is used for every product which the Tata company is making. So that is a company name branding. So branding आप company name पे कर सकते हैं. Individual name branding means that you choose some individual product is given a different name. For example, in case of in the case of Procter and Gamble, you have you have washing powders with the name of Ariel, and with the name of Tide, and you have shampoos with the name of Head and Shoulders. So Head and Shoulder, so every individual item is given a different name by the company, right? And that product is known by its brand name, not by the brand name of the company. Procter and Gamble के नाम से नहीं जाना जाता Head and Shoulders को, Head and Shoulder के नाम से जाना जाता है. So the brand which is made popular is the individual brand name and not the company brand name. Then you can have a separate brand family name. Separate brand family name means you can have a brand name for a full product line. For example, HUL has Lakme brand, और Lakme के अंदर उसके सारे cosmetics Lakme के आ जाते हैं. So this is a separate brand name for a particular प्रोडक्ट लाइन. सो HUL की कॉस्मेटिक्स की लाइन में एक ब्रांड नेम जो है वो लैक्मे है, राइट? सो दिस वे ऑल्सो यू कैन ब्रांड योर products. Then umbrella brand name. Umbrella brand name is when you use company's name along with the brand name, right? For example, Maruti Suzuki. Maruti Zen, right? Then you have you have Hamdard Ruafza. Okay, so now what are you doing? You are using the company's name Hamdard as well as Ruafza, the product's name, and when this kind of branding is done, it is known as umbrella brand name. So these are the various ways by which you can select the name of the brand. I mean, you have to as a marketer decide that whether you would keep a company brand of your product line, of your product whole product category as company name, as individual name, or as umbrella brand name. These are the decisions you have to take. Now this is all for branding. Now though branding is very important, but I've told you earlier also that in this chapter only this much is required. Then coming on to the packaging decisions. As a marketer, when we decide about the products, we also have to take the decisions regarding how the product will be packed, right? So product packaging decisions are also important. So what is packaging includes all those activities that focus on the development of a container. आपने अपने प्रोडक्ट के लिए एक कंटेनर, एक रैपर, एक जार, एक पैक क्या बनाना है उसको कवर करने के लिए, ये डिसीजंस पैकेजिंग के डिसीजंस के अंदर आते हैं. सो इट हैज़ ऑल्सो बिन कंसिडर्ड एज 5th P ऑफ मार्केटिंग. जो 4 P's हमने डिस्कस किए थे, उनमें कभी कभी ये बात भी आती है कि पैकेजिंग इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको 5वें P का दर्जा दिया जाता है. और इसमें एक और बात भी है कि पैकेजिंग अगर बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत बढ़िया हो, तो इट एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्स पर्सन ऑल्सो. क्योंकि अगर एक अच्छा पैकेज कहीं पड़ा है तो आप इमिडिएटली जाके उसको पिक करते हैं, देखते हैं, एंड मे बी यू मे बाय. सो पैकेजिंग इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट itself acts as a silent salesperson in case packaging is attractive and beautiful. So that is why packaging के ऊपर बहुत काम किया जाता है. और आज की डेट में आपको पता है डिज़ाइन इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत ही हाइप पे हैं. विद कुरियर कमिंग इन, यू हैव so many creative packages coming to your home delivered by courier online virtual businesses going on. I have seen there's a tremendous change in the way the packaging is being done. Lot of money is being spent on the packaging of a product, which makes it very customized, very beautiful, and when you get that product in your hands, you feel as if that product has been created only for you. There's a thank you note, there's a best wishes note, the packaging or the pouches used are very beautiful. So this all comes under packaging, which is creative packaging, जो मैं आगे बात करूंगी. So packaging आज की डेट में इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि काफ़ी सारा बिजनेस हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है. सो ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट होने से क्या है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आपको कुरियर कराना है. सो ऑब्वियसली
पैकेजिंग ऑफ लेट हैज़ इमर्ज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? सो उसके डिसीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीन तरीके के लेवल्स होते हैं पैकेजिंग के अंदर। एक प्राइमरी होता है जो एकदम प्रोडक्ट के साथ चिपका रहता है। दूसरा सेकेंडरी होता है जो उसके ऊपर कवर, मेन बॉक्स हो गया या कोई जार हो गया, सो वो एक सेकेंडरी पैकेज का लेवल रहता है। थर्ड पैकेज होता है शिपिंग के, अगर आपने उसको कहीं भेजना है तो आप कार्टन में या बॉक्स में, वुडन बॉक्स में, किसी में आप उसको शिप करते हैं। So three layers of packaging are generally used if the product has to be shipped. If not, then primary and packaging, secondary packaging is used, right? So इसलिए तीन लेवल पे आपको सोचना होता है कि आपकी पैकेजिंग कैसी रहेगी. Then, while you're deciding about packaging, you have to take care of five C's. The C's are, I think there are six C's. The C's are costing, although packaging should be very creative and very beautiful, but it involves cost. So how much cost are you ready to bear for packaging? Number two is it should be consistent. The packaging should be consistent, because once a package is fixed in the minds of the consumers about about a product, the color, the size, the logo used, everything is there. So that consistency should be maintained, otherwise the customer will not be able to identify the product, right? So then the colors should also be very consistent with the product and with what you are trying to deliver. So color should also be given a very good importance while you're deciding about a package. Then convenience of handling the package. It should not be cumbersome to pick the package, or it should be very convenient for the customer to handle it. Then there should also be the concern for environment. While we are deciding about the packaging, marketer को ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे पैकेजिंग ना यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, जो एनवायरनमेंट के लिए हजारस हों. सो इन सब चीज़ों का ध्यान आज की डेट में रखना बहुत ज़रूरी है. एंड while I was talking about virtual business and the beautiful packages and the way they are coming to the houses, which is creativity in packaging. Of late, it has come out. Packaging has become a big industry. In the weddings, also you find beautiful packaging gifts being packaged and given to the people. So creativity in packaging is become very, it's a lucrative industry. It's a lucrative it has become very important because of the importance of packaging in the and in the attraction it holds when you are trying to buy a product. So though the packaging is not very relevant after it is being opened, but if there are reusable packaging, if there are reusable pouches, then they can be they can be environmental friendly also. So you as a marketer have to think about various creative and innovative ways of packing the goods, and then see that they are not hazardous environmentally also. So you must have seen that these packaged products, the packagings which are coming nowadays, are very beautiful, very innovative, and lot of mindfulness has been used in them. So that means packaging is very important these days, especially after the pandemic, because most of the business has gone on online, right? So उसकी वजह से पैकेजिंग और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. और इसके बारे में डिसीजंस लेना, इसके बारे में सोचना, कॉस्ट कंसिडरेशंस, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. Now coming on to the next decisions which are regarding the labeling. कि अब हम लेबल कैसे लगाएं, उसके कौन सा लेबल लगाएं, किस तरह से लगाएं, क्या रहेगा. लेबलिंग का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सेलर, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सो जब आपने एक बॉटल पैकेजिंग की सोच ली तो उसके ऊपर भी लेबल लगेगा, आपने बॉक्स सोच लिया उस पर भी लेबल लगेगा. सो लेबल से एक कम्युनिकेशन डिलीवर किया जाता है, which is done through the पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट के पैकेज से एक कम्युनिकेशन दिया जाता है कस्टमर को, ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में और अच्छे से जान पाए कि उस प्रोडक्ट में है क्या, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में लीगल इन्फॉर्मेशन क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी एलर्जी इन्फॉर्मेशन क्या है. लॉट मैनी थिंग्स कैन बी पुट ऑन टू द लेबल, and it also acts as a very important and potent communication tool which gives a very fast information
to the customer as soon as he buys the product. So प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है इसमें हम जो देते हैं वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और उसके उससे रिलेटेड स्पेसिफिक लॉज क्या है. फॉर एग्जांपल अगर कोई एडिबल आइटम है तो उसके लिए हमें बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. इनफैक्ट इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन ईटेबल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज द पीपल कैन बी एलर्जिक टू देम and then how to use them, what all is there in the product has to be notified on the package. So usse related law, for example, in the case of tobacco products, you have to give the warning issued by the government that it is injurious to health. So जो भी चीज़ उससे related laws हैं या आप एडिबल आइटम्स के अंदर एफपीओ फूड प्रोडक्ट के जो उनके जो लेबल्स हैं वो लगाने पड़ते हैं. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको देनी पड़ती है जब आप एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं. लेबल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भी इम्पॉर्टेंट एक एरिया है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ यूपीसी, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है कि इसमें आप इन्वेंट्री और प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन द लाइंस ऑन द प्रोडक्ट विच आर स्कैन्ड बाय द retailer while he is handing over the product. So it tells you about how much inventory is there and how price controls also. So these are also very important. These labels can also be very important for using UPCs. Now, after knowing about labels, we would also like to know what are the types of label which are available. सो टाइप्स ऑफ लेबल के अंदर एक सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ लेबल है ब्रांड लेबल. ब्रांड लेबल वो है कि जो वो लेबल जो आपके ब्रांड को बाकी मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड से अलग दिखाए. तो लेबल का डिज़ाइन, स्टाइल, कलर, आपके प्रोडक्ट का पिक्चर, लोगो, ये सारी चीज़ें जब लेबल पे रहती हैं और आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये फलां फलां प्रोडक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का है, तो दैट इज़ नोन एज ब्रांड लेबल. और ग्रेड लेबल होता है जब लेबल के अंदर हम कैटेगरी ग्रेडिंग कोई ज़रूरत हो वो लिखते हैं. फॉर एग्जांपल एसीज़ के अंदर 5 स्टार रेटिंग, तो आपने 5 सितारा रेटिंग जो है वो उसको लिख दिया वहाँ पे. सो दैट विल बिकम अ ग्रेड लेबल. या ए कैटेगरी प्रोडक्ट, बी कैटेगरी प्रोडक्ट, सी कैटेगरी प्रोडक्ट, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, रेड डॉट एंड ग्रीन डॉट. सो दीज वुड कम अंडर grade label. Informative label is a label where you have to give a lot of information about the product which is legal and which has to be given, right? So ingredients को लेके, उसके usage को लेके, I mean legal हो भी legal plus otherwise, उसके usage को लेके, उसकी expiry date, उसका manufacturing date, all these information when is given on the label, it is known as informative labeling. Now, the next important decision which you have to take is about after sales services, which are also known as product support services. After sales services वो services हैं जो एक कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद एक कस्टमर को प्रोवाइड करती है, जिससे कि कस्टमर रिमेन्स वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी थ्रू आउट द यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट. सो जितनी इफेक्टिवली और जितनी एफिशिएंटली इन सेल सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा उतने ही खुश कस्टमर रहेंगे. Now, you need to understand that in marketing, the job doesn't end with selling the product. The job actually starts with after selling the product. Then you have to make the customer feel that throughout the use of the product, it is hassle-free, it is without without any problem, and whenever required, the company is there to help and support the customer. So this kind of feeling and this kind of services should be provided to the customers when we talk about after sale services. So after sale services में क्या आ जाता है? Free installation, free maintenance for say 2 years or 5 years, repair and maintenance का contract, swift delivery बहुत fast, ठीक है, 24/7 हेल्पलाइन. सो इस तरह से किसी भी तरीके की आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, गारंटी, वारंटी, राइट. सो ये डिसीजन भी मार्केटर को लेना होता है कि जब हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हम कितनी आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे और कितने साल तक देंगे और कब तक कस्टमर के साथ. एंड इन दिस वे what you do is you build brand loyalty also. The customer will become very happy and they will become loyal to your products and services. Now इसके रिगार्डिंग डिसीजंस हमें क्या लेने हैं?
हमें लेने हैं कि हम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो कितनी करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 24/7 हेल्पलाइन आउटसोर्स करेंगे या खुद देंगे, रिपेयर मेंटेनेंस देंगे, एएमसीज रखेंगे या नहीं रखेंगे, दीज आर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे या विद कॉस्ट देंगे, हमारी ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज पॉलिसीज रहेंगी या नहीं रहेंगी, रेगुलर कॉलिंग करेंगे या और ग्रीवेंस हैंडलिंग। सो इन सब डिसीजंस के ऊपर आपको सोचना है कि आप कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ कितनी प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप उनको प्रोवाइड करें, ताकि कस्टमर जो है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट हैप्पी रहे, डिलाइटेड रहे, और उसको ये ना लगे कि प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी ने कुछ देखा ही नहीं और ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया। सो जब कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है तो कस्टमर वापस प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता। इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज को एफिशिएंटली कंडक्ट करना, एफिशिएंटली प्रोवाइड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटर, एंड ही हैज़ टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स व्हेन ही इज डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट, right? So with that, I end up my lecture today. But very important thing I want to tell you here is that in a few short videos, I would be talking about various types of brand names which have been used in the marketing. There are brands based on animals, there are brand based on abbreviations, there are brand based on founder's name. So just tease your brain a bit and just try to find out what are the brand names which are based on abbreviations. So I'll be talking about it in after some time in few videos. So this is all from my side today. Thank you so much. Be happy, keep smiling, and have a nice day. Thank you.